नमस्कार। नमस्कार। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome you all to this wonderful, inspiring journey as we read together the Valmiki Ramayana in original, along with translations in English and Hindi. This project is especially for the youth of today, who, because of technology, have a much broader perspective on many things. These young generations tend to question everything handed down from older generations and also have a scientific bent of mind. They seek answers and explanations beyond what is obvious and visible. Further, many do not know Sanskrit in this day and age and are unable to read it, even if they do know Sanskrit. The majority of people, especially youth, may not find the time to read the complete Sanskrit version of this great magnum opus, and would tend to miss out on the beauty of this great epic by reading or watching or listening to a brief and abridged version of the Ramayana, or they may tend to rely on various commentaries of this huge poem. मैं इस अद्भुत प्रेरणादायक यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि हम मूल रूप में वाल्मीकि रामायण को अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद के साथ एक साथ पढ़ रहे हैं। यह प्रोजेक्ट खास तौर पर आज के युवाओं के लिए है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से कई चीजों पर व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। ये वे युवा पीढ़ियां हैं जो पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त हर चीज पर सवाल उठाती हैं, और उनका दिमाग भी वैज्ञानिक है, जो स्पष्ट और दृष्टि से परे उत्तर और स्पष्टीकरण की तलाश करता है। इसके अलावा बहुत से लोग संस्कृत नहीं जानते या संस्कृत पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। अधिकांश लोगों, विशेष रूप से युवाओं को इस महान कलाकृति के संपूर्ण संस्कृत संस्करण को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, और वे रामायण के संक्षिप्त संस्करण को पढ़ने, देखने, सुनने से इस महान महाकाव्य की सुंदरता से चूक जाते हैं, या केवल इस विशाल महाकाव्य की विभिन्न टिप्पणियों पर ही निर्भर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। For this reading, we are using the Valmiki Ramayana, Volume 1 and 2, with English and Hindi translations published by the Gita Press Gorakhpur. I would highly recommend that you get a copy of these two volumes so that you may read along with us, and it will also serve as a point of reference for working on projects and research that you would probably undertake in the future. The contact details are given here, and in case you do not find a store in your city or country that stocks them, you can directly get in touch with the details given here. As you can see, besides English and Hindi, it is also available with translations in Gujarati, Kannada, Telugu, and Tamil. But this is only 6 out of the 22 scheduled languages in India. Here is a wonderful opportunity for language experts and linguistic scientists to work on translations in the remaining 16 languages of the Indian schedule. There are various versions of the Ramayana with adaptations and modifications meeting local cultural practices that are available all across Asia, like the Ramayanas that you would find in Burma, Indonesia, Cambodia, Laos, Philippines, Sri Lanka, Nepal, Thailand, Singapore, Malaysia, Japan, Mongolia, Vietnam, and China. The original Sanskrit text of the Valmiki Ramayana in different languages of the world is yet to be attempted. इस पठन के लिए हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी
और हिंदी अनुवाद के साथ वाल्मीकि रामायण खंड 1 और 2 का उपयोग कर रहे हैं। मैं अत्यधिक अनुमोदित करूंगी कि आप इन दोनों खंडों की एक प्रति प्राप्त करें ताकि आप इसे हमारे साथ साथ पढ़ सकें और यह भविष्य में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रोजेक्ट और शोध कार्यों के लिए भी संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यदि आपको अपने शहर या देश में इनका स्टॉक रखने वाला कोई स्टोर नहीं मिलता है तो संपर्क विवरण यहाँ दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अंग्रेजी और हिंदी के अलावा गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल में भी अनुवाद के साथ उपलब्ध है, लेकिन यह भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से केवल 6 भाषाओं में ही उपलब्ध है। भाषा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के लिए शेष 16 भारतीय भाषाओं में अनुवाद पर काम करने का यह एक शानदार अवसर है। जबकि एशिया के विभिन्न हिस्सों जैसे बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम और चीन में स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुकूल संशोधन के साथ रामायण के संस्करण उपलब्ध हैं। वाल्मीकि रामायण के मूल संस्कृत पाठ को दुनिया की विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास अभी बाकी है। This project has been inspired by the wonderful animated series on the Valmiki Ramayana by Yashodeep Deodar on his YouTube channel, The 21 Notes, which created in me the curiosity and thirst for knowing more about this Adi Kavya. Then there were other channels that kept adding to this need to know more and more about our antiquity, history, and culture, which has endured the passage of time and is still alive and vibrant after thousands of years. It is our civilization's greatest gift that through the oral tradition, numerous ancient scriptures and texts have been preserved and they have been handed down through generations. Everyone has heard the story of Sri Rama, and there have been many versions that have followed over the millennia. People also know snippets or details of various parts of the Ramayana, but it is my finding that not many have read the original and complete Valmiki Ramayana as written by Rishi Valmiki many, many years ago. Therefore, it is my endeavour to offer this complete reading of the original text to give an opportunity to all to listen to and read the entire Valmiki Ramayana along with us. I request all the viewers once again to get a copy of the Valmiki Ramayana if you already do not have it, so that you can follow along. यह प्रोजेक्ट YouTube चैनल 21 नोट्स पर यशोदीप देवदार द्वारा वाल्मीकि रामायण पर अद्भुत एनिमेटेड श्रृंखला के कारण जिज्ञासा और ज्ञान की पिपासा से प्रेरणा का परिणाम है। ऐसे अन्य और भी चैनल हैं जहां हमें हमारी प्राचीनता, इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत सारी मूल्यवान जानकारी और अंतर्दृष्टि मिल सकती है, जो समय बीतने के साथ साथ हजारों वर्षों के बाद भी जीवित और जीवंत है। यह हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा उपहार है कि मौखिक परंपरा के माध्यम से कई प्राचीन धर्म ग्रंथों और ग्रंथों को संरक्षित किया गया है, जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। श्री राम की कहानी हर किसी ने सुनी है और इसके कई संस्करण हैं जो सहस्त्राब्दियों से चले आ रहे हैं। लोग रामायण के विभिन्न हिस्सों के अंश या विवरण भी जानते हैं, लेकिन मेरा निष्कर्ष है बहुत से लोगों ने ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, कई साल पहले लिखी गई मूल और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है। इसलिए मेरा प्रयास है कि सभी को संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनने और पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इसीलिए यह संपूर्ण पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा सभी दर्शकों एवं श्रोताओं से अनुरोध है कि वे गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित
वाल्मीकि रामायण की प्रति खरीदें और साथ साथ पढ़ें। With the colonial mindset having prevailed across 3 generations of modern thinking individuals and the academics, have often raised questions and created doubts about the veracity, antiquity, and reliability of the information given in most of our scriptures and ancient texts. While on one hand, we have acknowledged that we were pioneers in astronomy, mathematics, medicine, and the sciences, however, present-day generations arrogantly believe that technology is something only modern science created by the current generation is possible. They believe that unimaginably advanced technology in design and making of gadgets and weapons has yet to be invented or created. This has led to dismissing a lot of factual information present in our ancient texts as myths or legends. 3 पीढ़ियों में औपनिवेशिक मानसिकता हावी होने के कारण आधुनिक सोच और शिक्षाविदों ने अक्सर हमारे अधिकांश धर्म ग्रंथों और ग्रंथों में दी गई जानकारी की सत्यता, प्राचीनता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और संदेह पैदा किया है। यह स्वीकार करते हुए कि हम खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और विज्ञान में अग्रणी थे, यह विश्वास करना वर्तमान पीढ़ियों का अहंकार है कि प्रौद्योगिकी एक ऐसा विषय है जो केवल वर्तमान पीढ़ियों द्वारा आधुनिक विज्ञान द्वारा ही संभव है। जिन हथियारों और उपकरणों के डिजाइन और निर्माण अकल्पनीय रूप से उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हुए प्राचीन काल में किया गया है, उनका निर्माण अभी तक आज के समय में संभव नहीं हो पाया है। इसके कारण हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध बहुत सी तथ्यात्मक जानकारी को मिथक या किंवदंती कहकर नकार दिया जाता है। There is a humongous body of texts and works of Indian antiquity that are available. But since almost all the texts were written in Sanskrit, it has led to a lot of misinterpretation and very often delays in translation. And the much needed research into some of these subjects of these texts has not been a priority with academia. And thus a lot needs to be done. I am sharing here with links to some of the clips, 1-minute clips, for some of these videos from which I got to learn a lot about our antiquity and the research that has been done on this subject by modern researchers. Therefore, it is my endeavor to offer this program to give an opportunity to all to listen and to read the entire Valmiki Ramayana in original. All the links that are given here are also shared in a text form and can be clicked on. I encourage you to listen to the whole lectures as given, explaining about the truth about our Indian civilization and its antiquity. भारतीय पुरातन ग्रंथों और कार्यों का एक विशाल संग्रह उपलब्ध है, लेकिन चूंकि लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे, इसलिए अनुवाद में अशुद्धियां और विलंब हुआ तथा इन पाठों के विषयों पर अत्यधिक आवश्यक शोध प्राथमिकता नहीं रही और अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसलिए मेरा प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को मूल रूप में सुनने और पढ़ने का अवसर मिल सके। मेरा सभी दर्शकों और श्रोताओं से अनुरोध है कि वे गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण की प्रति खरीदें और साथ साथ पढ़ें। मैं हमारी प्राचीनता के विषय पर शोध की कुछ वीडियो और व्याख्यानों से एक मिनट की छोटी क्लिप्स साझा करना चाहूंगी। मैं आपको चैनलों पर जाने और पूरा व्याख्यान सुनने के लिए भी प्रोत्साहित करती हूँ। सभी लिंक नीचे विवरण में भी हैं, इसलिए उन पर क्लिक करें और वीडियो देखें। So when was the Ramayana written?
If we go by what is as the antiquity as we have seen in the previous research, we will see that the Ramayana is approximately between the years 12,209 and 12,000 BCE. It is accepted that that Valmiki wrote the Ramayana during the period of Rama's return to Ayodhya after the battle with Ravana and his coronation as king. I share with you some video clips from renowned researchers and experts on the Ramayana. I encourage you to visit these channels and listen to the complete lectures. As the great sage himself has declared, this is Itihasa, a narration of events as they happened. As it was the tradition of those times, this Itihasa was written in poetic form to make it easy to transmit via the oral tradition. It's like how, as adults, we remembered nursery rhymes and songs easily, even when we don't sing them for many years. The narration of events of the time was done in poetry form or meter to make it easy to learn, memorize, and recite without error. All great historical epics across cultures in different parts of the world were written in poetry. And the great legends of many ancient civilizations have been kept ingrained in the memories of their future generations through folk songs and poems. While stories in prose could be changed and amended based on the whims and fancies of the storyteller, poetry, however, is always retained in its original form. Therefore, it is unfair and inaccurate to dismiss poetry as a myth and maintain that prose is the only form of acceptable facts that make up the history of our times. रामायण कब लिखी गई थी? जैसा कि आप यहाँ साझा किए गए शोध से देखेंगे, रामायण का काल 12,209 से लेकर 12,000 ईसा पूर्व के बीच है। यह माना जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण उस समय लिखी थी जब राम रावण से युद्ध के बाद अयोध्या लौटे थे और राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ था। जैसा कि महान ऋषि ने स्वयं घोषित किया है कि यह इतिहास है, जो घटनाओं के घटित होने का वर्णन है। जैसा कि उस समय की परंपरा थी, इस इतिहास को मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रसारित करने के लिए इसे काव्यात्मक रूप में लिखा गया था। यह वैसा ही है जैसा कि वयस्कों के रूप में हम नर्सरी कविताएं और गाने आसानी से याद कर लेते हैं, भले ही हम उन्हें कई सालों तक ना गाते हों। उस समय की घटनाओं का वर्णन कविता अथवा छंदों के रूप में किया गया था, जिससे सीखना और याद रखना बिना किसी त्रुटि के सुनना और सुनाना आसान है। So why Ramayana and why now? This is Itihasa, which translates to that is how it happened. And because it happened, each of the stories provides us with a lesson via case studies for us to learn from. Isn't this what we learned in management and management schools and other forms of studies where we learn from case studies? So why the Ramayana and why now? After the Mahabharata war ended and Bhishma gives the gift of the Vishnu Sahasranam to the Pandavas and those present, when asked if there is a simpler and shorter version that is equal to reciting the whole Sahasranam, Krishna gave this advice and he said, those who recite this following sloka would amount to having said the whole Vishnu Sahasranama. He said, Sri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorami Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. But furthermore, knowing that in the fourth cycle of the Kal Chakra, the Kali Yuga, when the world was in great imbalance, as dharma will not be followed and adharma will be ruling everywhere, when adharma and evil forces are eradicated, humanity cannot be left in a vacuum.
Krishna in the Sahasranam very clearly says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya. So, Tadatmanam sridamayam. which really means that to end adharma, I will arrive and I will destroy all that is not adharma. But once adharma is destroyed, a vacuum will be created, and humanity cannot be left in that vacuum. So, if the lessons of righteous path found in the Ramayana will be the guidance that will serve humanity once righteousness is established. It is the lessons to be learned from the Ramayana that will anchor the coming generations to establish a prosperous and successful civilization for the benefits of all. Every aspect of the Eightfold Path, as given by Buddhists thousands of years later in 500 BCE, the basis of the teachings of the Jain Tirthankars and other great seers and prophets that followed many thousands of years later, can be found in the Ramayana, which is why this Adi Kavya is of such importance and relevance today, especially for the youth and the younger generations to follow. दुनिया के विभिन्न हिस्सों की संस्कृतियों में सभी महान ऐतिहासिक महाकाव्य काव्य रूप में ही लिखे गए थे और कई प्राचीन सभ्यताओं की महान किंवदंतियों, लोकगीतों और कविताओं के माध्यम से भावी पीढ़ियों की यादों में बसे हुए हैं, जबकि गद्य में कहानियों को कहानीकार की इच्छा के अनुसार बदला और संशोधित किया जा सकता है। कविता को उसके मूल रूप में संरक्षित रखा गया है, इसलिए कविता को एक मिथक के रूप में नकारना और यह कहना कि गद्य ही स्वीकार्य तथ्यों का एकमात्र रूप है, अनुचित और गलत है। मैं आपके साथ रामायण पर कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं की 1 मिनट की छोटी क्लिप साझा करती हूं। मैं आपको चैनलों पर जाने और संपूर्ण व्याख्यान सुनने के लिए अनुमोदित करती हूं। So what is the structure of the Valmiki Ramayana? It is believed that there are 300 versions of the Ramayana derived from the original written by Valmiki. And as per one researcher, these are available in 25 different languages. But as expected, every version of the story underwent many changes. The most popular one are the Kamban Ramayana, written in Tamil in the 9th century AD, and the Ramcharitmanas, written by Goswami Tulsidas between 1523 and 1623 AD. Despite being a monumental work comprising of 645 chapters organized in 7 books, this magnum opus has been successfully transmitted across generations and millennia. So much so that in 1523 AD, Goswami Tulsidas wrote Ramcharitmanas, a retelling of Valmiki Ramayana in Awadhi, a language commonly spoken by the people of the region. It is Ramcharitmanas that most people have read, but very few have read the Valmiki Ramayana in its original form. But the original, as Narada passed on the knowledge to Valmiki, who authored Valmiki Ramayana, is the present and the oldest available version of the Ramayana. The structure of this momentous and magnificent work, also known as an Adi Kavya, as the first poem written, comprises of 7 books called kandas or kandams. Each book is further organized into sargas or chapters or cantos, wherein the verses and slokas are written. It is interesting to note that the slokas or verses are thematically organized in each sarga, chapter or canto. While the entire narration follows a sequential timeline, narration of events as they occur, there is, however, the use of the concept of PIP, picture in picture, a technique that most media channels used today, where a story within a story has been introduced to add contextual relevance and background stories to the lives and characters one encounters, and also to give a feeling of the historical importance of places
visited, and traveled through by the different characters in the Ramayana. As the sage has clearly stated that this is itihasa, these interjected stories have great value in giving us insights into the antiquity of a place or an individual's genealogy. These stories have also added substantive value to a lot of research in many of the different fields that can be undertaken. And it is a complete reading of the Ramayana that we will undertake here in this project. ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण से प्राप्त रामायण के 300 संस्करण हैं और एक शोधकर्ता के अनुसार ये 25 अलग अलग भाषाओं में हैं और हर संस्करण के साथ वर्णन में कई बदलाव आए। सबसे लोकप्रिय 9वीं शताब्दी में तमिल में लिखी गई कंपन रामायण और 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस है। 7 पुस्तकों में व्यवस्थित 645 अध्यायों से युक्त एक महान कलाकृति होने के बावजूद इस महान रचना को पीढ़ियों और शताब्दियों से सफलतापूर्वक प्रसारित किया गया। वाल्मीकि रामायण के पुनर्कथन को 1523 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधि में लिखा, जो इस क्षेत्र के लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा थी। रामचरितमानस को ही सबसे ज्यादा लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने मूल रूप में वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है। परंतु नारद ने जिस मूल ज्ञान को वाल्मीकि को दिया था, उसी आधार पर रामायण वर्तमान का सबसे पुराना उपलब्ध संस्करण है। इस महत्वपूर्ण और शानदार कृति को आदि काव्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि लिखी गई कविता में कांड या कंदम नामक 7 पुस्तकें शामिल हैं। प्रत्येक पुस्तक को सर्गों या अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है और जिनमें छंद और श्लोक लिखे गए हैं। यह ध्यान रखना रुचिकर है कि श्लोक या छंद विषयगत रूप से सर्गों अध्यायों में व्यवस्थित हैं। संपूर्ण वर्णन घटनाओं के घटित होने के क्रमबद्ध समय वर्णन का अनुसरण करता है। हालांकि आज के दृश्य मीडिया द्वारा अपनाई गई चित्र तकनीकों के भीतर एक चित्र का उपयोग होता है, जहां एक कहानी के भीतर एक कहानी को उन पात्रों के जीवन में प्रासंगिकता और पृष्ठभूमि की कहानियों को जोड़ने के लिए भावना सहित प्रस्तुत किया जाता है। कथा के विभिन्न पात्रों द्वारा देखे गए और यात्रा किए गए स्थानों का ऐतिहासिक महत्व है। जैसा कि ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा है, यह इतिहासा है। इन प्रक्षेपित कहानियों को हमें किसी स्थान की प्राचीनता या किसी व्यक्ति की वंशावली के बारे में जानकारी देने में बहुत महत्व रखता है। कहानियों ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे शोधों में महत्वपूर्ण मूल्यों को भी जोड़ा है और इस परियोजना में हम यहाँ वाल्मीकि रामायण का संपूर्ण पाठ करेंगे। As you read the original Valmiki Ramayana, you discover the great detail in which facts, geographies, descriptions of places, and events have been conveyed in each of the verses. These are facts that many researchers from different fields have found to be true. Given that the timeline goes back to 12,209 BCE, there are still many facts that are being researched and that need to be researched. This is the reason this reading is called the Valmiki Ramayana for today's scientists and youth. It is not for the historian to comment on the Ramayana, but for the scientists of today to uncover the hidden facts and bring to light the proof that establishes the truth of the events as mentioned by Valmiki in the Ramayana, unfolding the dynamics of those times and establishing the veracity of the narrative. It is with the hope of reaching out to scientists in the various fields given in here. For scientists, there is enough of material in this magnum opus to take up lines of research in your subject of specialization. Numerous new precise scientific tools are available today to carry forward the research should you choose to go forward with it. I sincerely hope that after reading
this reading of the whole Valmiki Ramayana, all scholars and researchers out there take up projects in their respective fields and also come together for a multidisciplinary collaboration. I have shared with you some of the wonderful research being done, but a lot more needs to be done. And in integration of this research to add tangible value to the already vivid and beautiful narrative given by Valmiki in this Itihasa. And in keeping with this scientific spirit of inquiry, I will share with you some of the research and books available at the appropriate places during this reading. जब आप मूल वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो आपको उस महान विवरण का पता चलता है जिसमें छंदों में तथ्यों, भूगोल, स्थानों और घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों के कई शोधकर्ताओं ने सत्य पाया है। यह देखते हुए कि समय रेखा 12,209 ईसा पूर्व तक जाती है, अभी भी कई और तथ्य हैं जिन पर शोध किया जा रहा है और जिन पर शोध करने की आवश्यकता है। यही कारण है आज के वैज्ञानिकों और युवाओं के लिए यह पाठ किया जा रहा है। यह इतिहासकार का काम नहीं है कि वह रामायण पर टिप्पणी करे, बल्कि आज के वैज्ञानिकों का काम छिपे हुए तथ्यों को उजागर करना और उन सबूतों को प्रकाश में लाना है जो रामायण में वाल्मीकि द्वारा वर्णित घटनाओं की सच्चाई को सत्यापित करते हैं और समय की गतिशीलता को उजागर करते हैं। यह मानव विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, पुरातत्वविदों, वास्तुकला के क्षेत्रों के वैज्ञानिकों तक पहुंचने की आशा के साथ है। वनस्पति शास्त्री, प्राणी शास्त्री, जलवायु विज्ञानी, भूकंप विज्ञानी, भूविज्ञानी, मानचित्रकार, भूगोलवेत्ता, धातुकर्मी, इंजीनियर, नगर नियोजक, नागरिक नीति निर्माता, राजनीतिक वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, अनुवंशिकीविद, युद्ध रणनीतिकार, वैज्ञानिकों, इन सब के लिए महाकाव्य में शोध कार्य के लिए पर्याप्त सामग्री है। So the structure of the Valmiki Ramayana, each book is divided into cantos, sargas and chapters. The first book is Balakand, the book of youth. The second is Ayodhyakand, the book of Ayodhya. The third is Aranyakand, the book of the forest. Fourth is Kishkindakand, the book of Kishkinda. Fifth is Sundarkand, the book of return, the book of achievement. Sixth is Yuddhakandam, the book of war, and the seventh is Uttarakandam, the book of return. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि कुल 7 पुस्तकें हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और अंतिम उत्तरकांड, जिसमें श्री राम की वापसी का वर्णन है। In our next session, we will begin with the reading of the first book of the Valmiki Ramayana, the Balakand, the book of youth. After each Sanskrit sloka and verse, it will be read. It will be followed by translation in Hindi and English. This will be followed by a bell sound indicating the reading of the next sloka or verse in that kanda. As the sargas are thematically organized, it will be our endeavor to read in one session the sargas of one theme. हम अपने अगले सत्र में युवाओं की पुस्तक बालकांड के पाठ से शुरुआत करेंगे, जिसमें श्री राम के बाल समय का वर्णन किया गया है। प्रत्येक सर्ग के संस्कृत छंद श्लोकों के बाद क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ा जाएगा। प्रत्येक सर्ग में छंदों और श्लोकों की अलग अलग संख्या होती है और इन्हें वाल्मीकि द्वारा विषयगत रूप से व्यवस्थित किया गया है। निरंतरता और संदर्भ के लिए हमारा प्रयास होगा कि हम वाल्मीकि द्वारा व्यवस्थित विषयों को एक ही पाठ में प्रस्तुत करें। आपको प्रत्येक श्लोक
या छंद के संस्कृत पाठ से पहले एक घंटी की ध्वनि सुनाई देगी। Finally, I would like to acknowledge and express my gratitude to the many modern day researchers and scholars who have had the courage and tenacity to bring to the public their path-breaking research. Their works have been a major contributing factor to my desire to embark on this program of reading this magnum opus with both English and Hindi translations. I know there are many who have put in great effort in bringing these works to you on different platforms, on the internet and website, mobile apps, and videos on YouTube. I humbly request you look at this as one more such offering in the service to humanity. अंत में मैं उन कई आधुनिक शोधकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके पास अपने अग्रणी शोध को जनता के सामने लाने का साहस और दृढ़ता है। आप सभी के लिए अंग्रेजी और हिंदी अनुवादों के साथ इस महान रचना को पढ़ने के कार्यक्रम को शुरू करने की मेरी इच्छा में उनका काम एक प्रमुख योगदान कारक रहा है। मैं जानती हूँ कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट और अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्स और वीडियो के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस काम को आप तक पहुंचाने में बहुत प्रयास किया है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि इसे मानवता की सेवा में एक और प्रस्तुति के रूप में देखें। If you would like to support our efforts, considering becoming a sponsor on Patreon or make a contribution through any of these options, I also invite you to subscribe to this channel. Please also do share with your family and friends the links to this reading so that they may also benefit from it. यदि आप हमारे प्रयासों का समर्थन करना चाहते हैं तो प्रायोजक या संरक्षक बनने पर विचार करें या इन विकल्पों के माध्यम से योगदान दें। लिंक विवरण में दिए गए हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे वाल्मीकि रामायण पढ़ने से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।